Hello there, everybody. Welcome back to the channel. Today we're going to be watching and reacting to this video here by Nikita. The link to this video will be in the description down below, so make sure to go and check it out. But this video was recommended to me, during one of my recent live streams. I don't remember which one or who recommended it to me, so I apologize that I can't shout you out. But yeah, why many educated Indians are supporting Pakistan, released 4 days ago, has 4.2 million views. This is not anything to do with the video, but yep, there's links all right here. Oh, she does have a reference link to a Google Doc with all of her references, so go and check that out as well. We are going to have to use AI, or not AI, oh, it's probably AI. We're using YouTube's auto-generated translations because I do believe the video is in Hindi. But yeah, we're going to watch this. We're going to react to this. We're going to see what my take on it as well. We kind of saw a little bit of this during some of the live streams that I've done. So yeah, let's just get right into it, brother. Let's just get right into it, yeah? इंडिया शायद इकलौता ऐसा देश होगा जिसके जवान तो सरहद पे लड़ रहे हैं, लेकिन देश के लोग उस दुश्मन से गले मिल People are hugging the enemy? I don't think that's true. Well, actually, maybe it is true. I was going to say, like, the U.S. has a lot of people who are weirdly supporting people that would actively hurt them and hurt others in the U.S., but we're not fighting on the border. So maybe, yeah, maybe this is true. I'm trying to think, like, is there any other country? I mean, maybe some of the Ukrainians, like in Donbass or whatever. I think like the sentiment in like Donbass was a lot of them wanted to be part of Russia again, but most of them didn't. I don't know. I don't know. It's contentious. आप खुद ही कॉन्ट्रास्ट देखो ना, ये है पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट की हमारे बारे में सोच। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया है, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास। What is this up here? What is this? A voice of Bihar. Bollywood, which so much wants ties with Pakistan actors, will be surprised to see this interview of some famous journalists of Pakistan where they openly talk of making Bollywood actresses a sex slave when they win against India. That's weird. रास्ता जंग हो जाती है, तो ख्वाहिश क्या है आपकी? इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। कह रहा है कि अगर कल को पाकिस्तान इंडिया पर कब्जा कर लेता है तो मेरे तो एक ही ख्वाहिश है कि क्या हम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को हमारी सेक्स स्लेव्स बना सकते हैं। लेकिन उन्हीं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का पाकिस्तान के लिए सपोर्ट देखो। काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। इंडिया के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी उनके बारे में ये कह रहे थे, वो भी 26/11 के अटैक के बाद। Pakistani players are the best T20 players in the world. वो कलाकार ये दो अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। पहलगाम अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सारे He was a terrorist. He was an artist. पाकिस्तानी एक्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए, पर हम इंडियंस इन एक्टर्स के पीछे इतने पागल हैं कि हानिया आमिर और मावरा हुसैन के बैंड अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए इंडियंस They bought VPNs to access these Pakistani actors. So, okay. I mean, I can understand. I don't know. I'm not one for like celebrity worship culture as it is. So, like, I'm trying to think of a way like to justify them being okay doing this, but it's not. And like in my opinion, it's not. Celebrity worship culture is the worst. And if you happen to bypass a block to get a VPN to continue the celebrity worship, that's a little odd. That's a little weird. VPN का सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं। इनफैक्ट जब इस अटैक के बाद हानिया आमिर को दिलजीत की मूवी से निकालने की बातें चल रही थी, उसके रिपोर्ट्स आ रहे थे, तब हानिया से ज्यादा तो कुछ इंडियंस ऑफेंड हो गए थे। What did that say? The attack looks like was an inside job, and India found a good reason to blame all Muslim Pakistanis. Where was the Indian security during the attack or before the attack? The Indian securities, there, what was India supposed to have this tourist location completely armed with like soldiers? Like, what did they even expect? What do they mean by this statement?
What do they mean by this statement? That's a crazy thing to post. And 271 likes as well. आप सोचो हमारे देश में चल क्या रहा है। अभी पहलगाम अटैक से पहले फवाद खान की मूवी आबिर गुलाल इंडियन सिनेमा में अभी मई में ही रिलीज होने वाली थी। रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान के एक मिलिट्री ऑफिसर की बेटी ईमान इस्माइल को भी प्रभास की एक अपकमिंग मूवी के लिए साइन किया गया था, फौजी नाम की। हानिया आमिर को भी दिलजीत दोसांझ की मूवी सरदार जी 3 के लिए साइन करने की रिपोर्ट्स थी। और हनी सिंह और आतिफ असलाम की भी एक नए म्यूजिक एल्बम के लिए कोलैबोरेशन होने की भी रिपोर्ट्स थी। ये So a lot of Pakistani content is blocked now. सब छोड़ दो, मौला जट नाम की एक पिक्चर रिलीज होने वाली थी जिसमें फवाद खान, माहिरा खान और हमजा अली एक्टर्स है। हमजा अली, आप जानते हो ये कौन है? हाफिज सईद का फैन। इसने खुद ही कहा है कि भले ही इंडियन गवर्नमेंट बोले कि हाफिज एक टेररिस्ट है, मैं Say he's a terrorist. I know, was a righteous man, huge respect. What? So he's like buddy with terrorists? नहीं मानता। मेरे लिए तो हाफिज सईद एक राइटियस मैन है। पहलगाम अटैक और 26/11 के पीछे का मास्टरमाइंड, ऐसे आतंकवादी हमले जिसमें 175 इंडियंस की जान चली गई थी, वो हाफिज सईद इस बंदे के लिए एक राइटियस आदमी है और इनकी पिक्चर को हम इंडिया में रिलीज होने देने वाले थे। यार, हम और कुछ पाकिस्तान से सीखे ना सीखे, एक बात तो हमें जरूर सीखनी चाहिए, पेट्रियटिज्म, देश के प्रति प्यार। It's good. It's okay to be patriotic. The subtitles are a little rough. They're a little rough. I'm trying to get through it though. हानिया आमिर जिसको सरदार जी 3 मूवी मिलने वाली थी और फवाद खान दोनों ऑपरेशन सिंदूर के लिए इंडियन आर्मी को कावर्ड। I want to read this. One of the victims of Indians' aggression is a child. What kind of state bombs multiple civilian sites while people are sleeping? They weren't civilian sites. They were known terrorist encampments. I don't have a fancy words right. Oh, what is this? Not a single Pakistani I saw took joy in the Pahalgam attack. Everyone condemned it, yet countless Indians on Twitter are openly celebrating the death of an innocent child. From everything I've saw, there were no. I mean, it was terrorist encampment. I don't have fancy words right now. I have anger, pain, and a heavy heart. A child is gone. What? A child is gone. और shameful बोल रहा। Is there proof that civilians were harmed? रईस मूवी की एक्ट्रेस माहिरा खान तो इंडिया के अटैक्स को कंडेम करते हुए Pakistan is instantly blamed without any evidence. I'm grateful that I live in a country where I am not dictated to say what I have to. I have a voice and I can use it. We speak up when there are injustices in our own land. We condemn violence wherever it happens, even when my country, Pakistan, is instantly blamed without any evidence. India, your war and hate rhetoric has continued for many years. I have seen and experienced it with my own eyes. Your media fans the flame of division. Your most powerful voices remain silent in the face of genocide and war crimes. Instantly jumping in and labeling it genocide just right away. And in that fear, you claim victory, but to me, the silence is the greatest defeat. You attack cities in the middle of the night and call it a victory. Shame on you. But Pakistan, I love you. May we do the right thing. May we never stoop to the level, even after the heinous provocations. May peace prevail. Amin, Pakistan. This. Okay, so like I said before, it's okay to be patriotic for your country, right? And in this instance, she's Pakistani and she's being patriotic for Pakistani. No, but from everything I've seen, evidence showing India targeted these terrorist encampments. They didn't target, like cities, right? Crazy. इंडिया को ही झूठी कंट्री बता रही है। वो कह रही है कि हमारे देश को बिना कोई रीजन के इंडिया हमेशा ब्लेम कर देता है। रिसेंट की न्यूज है, पाकिस्तान में एलईटी के जो टेररिस्ट मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में, उनके लिए एक स्टेट फ्यूनरल रखा गया और literally the terrorists were killed and the military is there at the terrorist funeral. एलईटी कमांडर अब्दुल रौफ, जो कि एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, वो इस फ्यूनरल को हेड कर रहा था और पाकिस्तानी आर्मी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। इसके बाद भी इनको प्रूफ चाहिए। मावरा होकेन, फरहान सैयद, बिलाल अब्बास, हर पाकिस्तानी एक्टर आज इंडिया के खिलाफ है। उनकी एक टीवी एक्ट्रेस दुरिफ फिशान सलीम, जिसको भी इंडियन से काफी व्यूअरशिप मिलती है, उसका अभी एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें वो हिंदुत्व को एक सुप्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बताया। Zionism and Hindutva are twin supremacist ideologies. Interesting.
Interesting. लेकिन जब भी पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक्स किए ये सारे एक्टर्स चुप हो जाते हैं या फिर इवन वर्स उसे सपोर्ट करते हैं. The Pakistani actor cum singer Ali Zafar came out in support of Pakistani Prime Minister Imran Khan and applauded his speech as he addressed India over the Pulwama terror attack. पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो इनसे भी एक कदम आगे हैं. कई बार ये एंटी इंडिया और हिंदू फोबिक बातें कर चुके हैं. इनके एक्स कैप्टन शाहिद अफरी ने तो पहलगाम अटैक का पूरा ब्लेम इंडिया और इंडियन आर्मी पे डाल दिया. खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है. इसके पहले भी शाहिद एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स बहुत बार दे चुके हैं. टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है थाली लेके यूं यूं करके क्या कहते हैं उसको पता नहीं आरती पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए. तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया. शोएब अख्तर ने तो ओपन मीडिया में गजवा हिंद की बात कही थी. ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से. That's crazy. What? It's been written in our books that a conquest of Hindus will happen and the river of Attak will see bloodbath twice. Then these forces will conquer Kashmir, and then inshallah we will march further into India from Gwaza and what? वो कश्मीर फतह करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह. Why is there so much rhetoric? That's one thing that I don't understand. There's so much rhetoric. Like it's the same thing with like Jewish people as well. It's like, oh, we're gonna kill them and bathe in their blood, or like bathe the river in blood of of our enemies. It's so crazy. It's so wild, right? Like, I don't know, man. आगे चलेंगे. हमें एक बात समझनी है कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले पाकिस्तान से सुलह करने की, उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, पाकिस्तान की जनता उसे कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं करेगी. और इसके पीछे एक बड़ा रीजन है. आप पाकिस्तान का हर एक सिस्टम ले लो, मीडिया, उनकी फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन सिस्टम और इवन उनका पॉलिटिकल सिस्टम. And also the thing is, like a lot of, I mean, it's national propaganda as well being pushed. So, I mean, they could 100%, these people could 100% think what they're saying is in the right? Like in their mind, in their reality, it is right, it is the correct thing. Even though in like everyone else's reality, it's not the correct thing, right? So again, like we don't hate the normal people. You need to hate the government, you need to hate the system. Like the people. Like this is like what I say with with China, right? I absolutely hate and detest the CCP, the Communist Party of China. Absolutely hate and detest it. The people, though, I judge the people upon the basis of their merit and their character. Okay, I'm not going to instantly hate Chinese people. Why would I do that? That's a stupid thing to do. But based off of what I've seen, I hate the Chinese government, right? Based off what I've seen, I hate the Pakistani government, right? Like that's the way it should be. You like the people, hate the government. कुछ कंप्लीटली हेट फॉर इंडिया पे ही बेस्ड है. ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसका टाइटल है टीचिंग इंटॉलरेंस इन पाकिस्तान. इस रिपोर्ट में यूएस ने पाकिस्तान के स्कूल के टेक्स्ट बुक्स को स्टडी किया जो पूरी की पूरी हिंदू और इंडियन हेट से भरी हुई थी. फॉर एग्जाम्पल क्लास 7th की टेक्स्ट बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि आजादी के This is what I literally just talked about. Like this is what the governmental propaganda pushes towards them. So it's like their reality. This is correct. There were two enemies of Muslims, the Englishmen and Hindus. Both of these were against the formation of Pakistan. On one hand, the Englishmen renounced the division planned by Hindustan, while on the other hand, Hindus were planning to occupy the entire Hindustan and enslave Muslims? What? वक्त हिंदूज मुसलमानों के दुश्मन थे. हिंदुस्तानी पूरे भारत को ऑक्यूपाई करके मुसलमानों को उनका गुलाम बनाना चाहते थे. I mean, yeah, if you're teaching that to kids, they're going to start off right off the bat with like, oh man, the Hindus wanted to enslave us. They're going to grow up literally full of hatred for their entire lives against Hindus.
बुक में तो उन्होंने लिखा है कि हिंदूज मुस्लिम्स को एलिमिनेट करना चाहते थे और ये Hindu racists wanted to eliminate not only Muslims, but all non-Hindus. Christians and other minorities become victims of racist and biased policies on a regular basis. Even half a century after the creation of Pakistan, these organizations are still working to eliminate Muslims. As a result, violence has occurred between Hindus and other groups living in Pakistan, which resulted in the destruction of the Babri Mosque and Hindu-Muslim riots in Gujarat. In the past, Shuddha and Sangathan movements were launched to bring back the minorities into the fold of Hinduism. The present behavior of Indian Hindus is similar to some 150 years ago. I mean, you're just starting it off. You're kicking it off like this isn't a school book. This isn't a grade 8 school book. Whenever Hindu leadership got the chance, they try to suppress rights of Muslims and destruct their culture and tradition and language. What? That's crazy. Isn't India like one of the most diverse culturally, religiously? What? Let me look this up. How many Muslims in India? 204 million. Population of Pakistan, 247 million. There are nearly as many Muslims in India as the entire population of Pakistan. That's crazy. आज तक चल रहा है. उनके टेक्स्ट बुक्स में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी हिंदू इंडिपेंडेंस Indian nationalism, purely Hindu in religion. मूवमेंट करके बताया है और सारे बुक्स में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हिंदूज की थी और उन्होंने पूर्ण स्वराज इसलिए डिक्लेयर किया था क्योंकि वो अपना पूरा हिंदू देश चाहते थे. गांधी जी भी हिंदूज के लिए लड़ रहे थे. ऐसी बातें लिखी हुई है. इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का डेटा छोड़ो, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि उन्हें हिंदूज को देखकर मार देना चाहिए. अपना देखे तो it's like that one meme, right? The one meme of the kid, like the lady is like asking all the kids what they want to do when they grow up, and like the one kid is like, I want to be the army and defeat India, and everyone cheered and clapped. से आप पढ़ा के आ रहे हैं मदारिस में, स्कूलों में. मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं अजीबोगरीब किस्म के सवालात करते हैं. एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था, तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते. हमारी एजुकेशन सारी हिंदुओं और सिखों की नफरत के ऊपर बेस है. मुतालिया पाकिस्तान देखे हिंदू ये था, गांधी ये थे, सिख ये थे. पाकिस्तानी हिंदूज भी कह चुके हैं कि उनके टेक्स्ट बुक्स में किस तरीके का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पढ़ाया जाता है. मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है. पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया. अपने भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला. इनकी किताबों में इन्हें कम्प्लीटली ऑल्टर्ड हिस्ट्री सिखाई जा रही है. तभी तो इंडिया में जहां बच्चों का सपना होता है कि हम बड़े होकर पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, पाकिस्तानी बच्चों का स्कूल से ही सपना होता है इंडिया को कैसे भी This is what I was just literally just talking about. खत्म करना. Already, it's literally what I was talking about. That's crazy. स्कूल से ही सपना होता है इंडिया को कैसे भी करके खत्म करना. When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. कि वो गंदे लोग होते हैं. क्यों गंदे लोग होते हैं? इससे होते हैं क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं और वो पूजा करना बुरी बात है. हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है. इस वीडियो में पाकिस्तानी बच्चे बता रहे हैं कि कल को जब पाकिस्तान इंडिया पर कब्जा कर लेगा तो उसके बाद वो हमारे देश में आकर क्या क्या करेंगे. इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे. कितना मजा आएगा जब हम रेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे. ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे. एंड आजकल तो पाकिस्तान में इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म भी काफी बढ़ चुका है. बीबीसी का एक पाकिस्तान पे आर्टिकल. They're having kids say that sort of thing, like this derogatory, discriminatory stuff. That's crazy. है जिसमें पाकिस्तानी खुद को इंडियन से. What does that say? Bam, we're not the same. Bam, we're not the same. I don't know. Pakistan and British Pakistani communities are vastly different from Indian. I mean, ask about what happened with the whole Pakistani
grooming gangs in the good old UK, huh? रेशियली डिफरेंट बता रहे हैं. इसी बीच एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गेस्ट के साथ बैठ के प्रियंका चोपड़ा को मेड बुला रहे हैं उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से. एक बंदी आके यार बैठ गया, वो आपस में बात कर रहे, तो मैं आगे हूँ पीछे हूँ, मैं कहा मैं कहाँ जाऊँ. थोड़ी देर बाद उठ के चलेगी. मैं कौन मेड है क्या है, मैं कौन थी ये? प्रियंका चोपड़ा बैठी हुई थी. मेरा सारा जो क्रश मेरा सब कुछ था ना, वो आपने कहा काला. I don't know what that means. I don't know. Someone will have to explain in the comments. I mean, if it's like a super derogatory thing, I'm sure YouTube will block the comments anyways. But I don't know what it means. I will lick the black salt. Is that like what? Next movies. यही बच्चे जब पिक्चरें देखते हैं तब उनमें भी यही सिखाया जाता है. जिस फवाद खान को इंडिया में ह्यूज पॉपुलैरिटी मिली, मल्टीपल बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स मिले विद टॉप सेलिब्रिटीज, उसकी एक सीरीज दास्तान बनी है 1947 इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पर. लेकिन इस सीरीज ने इंडियंस को, हिंदूज को पार्टीशन का सबसे बड़ा विलन बता दिया. एक एपिसोड में सिख्स और हिंदू. Yeah, that's unfortunately also like the case over here. I didn't watch it, but I remember seeing when it came out. God, what is that? There was that Disney show about the superhero girl Miss Marvel. Like her family, like the whole reason she got her family is because from like bangles that her family passed down, but she's like Pakistani, right? And I don't know. It painted India in a very negative light from what I remember reading about. And this was before I even looked into anything much about India in general, right? I don't know when that show even came out, like 3 years ago, 4 years ago, too long ago. And I don't really honestly care about the show, but like this is yeah. उस मुस्लिम घरों पर जाकर हमला कर देते हैं, सारे आदमियों को मार डालते हैं और उनकी वाइफ्स का. All men get brutally killed while the women were raped and killed. Some women committed suicide to save themselves from that fate. Bono and Bibi, however, survived and are rescued by Salim's Hindu friends. रेप करते हैं और इनमें से एक रेप करने वाले का नाम इन्होंने बराबर राम रखा है. आयरनी देखो, ये इंडियन आर्मी को तक अपनी मूवीज में रेपिस्ट और वुमेन अब्यूजर बताते, वरना मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इन मुसलमान छोकरियों के जिस्म से खेलता. जबकि पूरी दुनिया जानती है. I mean, that's propaganda, right? That's on, continuously push the propaganda, right? Like the media, the best way to control a populace is through the media, and that could be it, news media, that be it, these movies and TV shows. आर्मी ने बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान. During the Liberation War, Pakistan military personnel and their local cohorts raped between 200,000 and 400,000 women in a systematic campaign of genocidal rape. These rapes caused thousands of pregnancies, births of war babies, abortions, and even suicides. Most Bangladesh estimates suggest that the Pakistan army and their local Islamist collaborators caused the deaths of up to 3 million people in a span of 9 months. Wow, this is like all the rapes that happened during World War II, when the Soviets occupied much of like Poland and in Germany and whatnot. They committed a lot of rapes as well. Soviet Union rape number. This is a weird thing to Google search, right? Like what am I even doing here? But estimate precise numbers, yada yada yada. Historians suggest that up to 2 million German women were raped, particularly in East Prussia, Pomerania, and Silesia. I don't know what those are. Berlin estimates Berlin range between 95 to 100,000. Other areas between 70 to 100,000. Estimates suggest that up to 240,000 German women died as a direct or indirect result of rapes related diseases. And this is like Soviet soldiers. Estimated up to 2 million German women were raped. Crazy. 2 से 4 लाख बंगाली औरतों का मास रेप किया था, जिसके खिलाफ ही हमारी इंडियन आर्मी लड़ रही थी.
इनफैक्ट इनकी अभी रिसेंट की ही मूवी वार में दिखाया है कि इंडिया कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स करवा रहा है और पाकिस्तानी फोर्सेस इंडियन टेररिस्ट से कश्मीर की जनता को बचा रही है। What? The team also killed this man, Sanjay Bharadwaj, a first contact low-level raw operative. Our intelligence sources indicate that a high-level independent contractor has been hired to carry out one of the biggest terrorist attacks in the history of Pakistan. ऐसे मूवीज से जो कम्प्लीटली झूठ पर आधारित है, पाकिस्तानी का पर्सपेक्टिव यही शेप होता है कि दुनिया में उनका सबसे बड़ा दुश्मन है भारत और वहाँ के हिंदूस। इसीलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम्स। ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम पर पूरा कंट्रोल है, चाहे वहाँ पे कोई भी पीएम हो। इसीलिए वहाँ की जनता में एंटी इंडिया हेट इतना डीपली इंडोक्ट्रिनेटेड है कि वहाँ आज तक एक भी प्रो इंडिया लीडर जीता ही नहीं है। वो लीडर जो इंडिया से दोस्ती की, सुलह करने की बात करे, वो उनके पॉलिटिक्स में टिक ही नहीं सकता है। इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, सब ने एंटी इंडिया बातें करके ही वोट्स बटोरे हैं। मोदी का जो यार है वो देश का गद्दार है, ऐसी बातें करके तो वहाँ इलेक्शंस जीते जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्रो इंडिया बातें करने लगे उस पर अटैक्स होने लगते हैं। सेम चीज इमरान खान के साथ भी हुई ना, जब वो इंडिया की तारीफ करने लग गया था। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। वो इलेक्शन से हार गया और पावर में आ गया शहबाज शरीफ, जो आज आर्मी के कहने पर इंडिया से वॉर वेज करने को तैयार है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ये वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान का फाउंडेशन टू नेशन थ्योरी खुद ही एक ऐसे बिलीफ पर बेस्ड है कि वो लाइफ के हर एक पॉसिबल एस्पेक्ट में हिंदू से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। Well, our forefathers, they thought. I mean, there's going to be a two-nation, thing happening here shortly, right? There's going to be Balochistan and Pakistan, right? We are different from the Hindus in every possible aspect of life. And he says this even though there are Hindus in Pakistan. रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, थॉट्स, एम्बिशंस, पाकिस्तानीज का मानना है कि इन सारे एस्पेक्ट्स में हमारा और इंडियन हिंदूज का कोई मेल ही नहीं है। Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. अब इसके विपरीत अगर हम हमारे देश की फाउंडेशन की बात करें, वैल्यूज की बात, There's 200 million Muslims living in India, nearly the entire population of Pakistan. Let me just reiterate that. 200 million Muslims in India. करे तो हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है कि धर्म एक विश्वास हो सकता है, लेकिन इंसानियत हमारी पहचान है। हमारे स्कूल्स के प्रेयर्स में भी हमें सर्वधर्म संभव की सीख दी गई है। हमें बताया गया है कि हर एक धर्म एक समान है और हमें सबकी इज्जत करनी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंडिया में हम सबको मिलकर रहना है। हमारी डाइवर्सिटी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। And that's one of the things that's always attracted me to learning more about India, Like, I'm agnostic, right? Like, I don't follow any one particular belief system. And seeing this, like they said, like she said, the diversity in just the culture and religion and the people and the languages and the geography, everything. This is what's so appealing about India to me. That's why I learn about it every day. That's why I talk to Indian people every day. That's why I play so much Indian-based Geoguessr. It's here I am gushing over India. Jeez. Okay. इसीलिए असल मायने में हम सेक्युलर है, क्योंकि हमने अपने देश के अंदर एक दूसरे के लिए, सबके लिए जगह बनाई है, सिर्फ जमीन के टुकड़ों में नहीं, दिलों के कोने में भी, जो पाकिस्तान किसी दूसरे धर्म के लिए करने की सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए हाँ, मेरा भी मानना है कि जब तक पाकिस्तान की ऐसी डिवाइसिव सोच है, जब तक पाकिस्तान की हर एक सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनकी फिल्म इंडस्ट्री, उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स, उनकी जनता में हिंदुस्तान के प्रति नफरत खोलते रहेगी, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी ये जंग जारी रहेगी। और इसीलिए मेरा ये भी I mean, it's instilled propaganda from when they were children, and it's literally in their textbooks. I had no idea that was the case, but it's literally in their textbooks that Indian Hindus are evil.
मानना है कि सिर्फ जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस तरीके के इश्यूज एस्केलेट हो, हमें सिर्फ तब उनके प्रोडक्ट्स का, उनके लोगों का, एक्टर्स का, सिंगर्स का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, ये जारी रहना चाहिए। पुलवामा अटैक के बाद जैसे ही चीजें थोड़ी सी शांत हो गई, इंडियन कोर्ट्स ने बैन को लिफ्ट कर दिया। क्या रीजन देकर? पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति किसी दूसरे देश के खिलाफ नफरत दिखा के आप प्रूव नहीं कर सकते हो, स्पेशली अपने पड़ोसी देश के खिलाफ। एंड आई अग्री विद दिस, लेकिन ये चीज सिर्फ तब तक सही है जब तक आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान नहीं है। इंडिया ने सेल्फलेसली एक दो बार नहीं, कई बार पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, बट पाकिस्तान हैज ऑलवेज बिट्रेड इंडिया। 1947 इंडिया पार्टीशन से उभरा भी नहीं था कि पाकिस्तान ने तुरंत इंडिया पर वॉर वेज करके जम्मू कश्मीर के इन हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर भी फ्रेंडशिप और पीस का हाथ बढ़ाते हुए इंडिया ने एसेट डिवीजन अग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपीस ट्रांसफर कर दिया। गांधी जी ने तो इसके लिए भूख हड़ताल तक रखी थी, पर इसके बदले में पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? 1965 का वॉर, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की पाकिस्तान की पॉलिसी जो आज तक जारी है, और उनके नेताओं ने इंटरनेशनल फोरम्स पे भारत के खिलाफ 1000 साल का वॉर डिक्लेयर कर दिया। They are a part of the people of Pakistan. We will wage a war for 1000 years. नेक्स्ट, इस सब के बावजूद 1999 में हमारे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद बस से लाहौर तक की यात्रा की और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पर फिर उसी साल इसके कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान बिट्रेड इंडिया वंस अगेन, कारगिल वॉर। फिर 2001 में इंडिया ने परवेज मुशर्रफ को आगरा बुलाया पीस डिक्लेयर करने के लिए, पर अगेन उसी साल क्या हुआ? पार्लियामेंट अटैक। अगेन 2008 में भी हम पाकिस्तान के साथ पीस टॉक्स कर रहे थे और इसके बदले हमें क्या मिला? 26/11 का मुंबई अटैक। एंड एज लेटेस्ट एज इन 2016 पिछला सब कुछ भुलाकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए 2016 में पीएम मोदी भी लाहौर चले गए थे। लेकिन इस विजिट के भी सिर्फ कुछ हफ्तों बाद ही पाकिस्तान ने पठानकोट पर अटैक कर दिया। बट इस बार ये अटैक इंडियन गवर्नमेंट का पाकिस्तान के प्रति एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट था, इंडिया के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। पठानकोट हमले के बदले भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स कर दिए और पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दिया कि ये नया भारत सिर्फ अमन और शांति की नहीं, बल्कि उसी अमन और शांति के लिए घुसकर मारने की भी ताकत रखता है। अब देरी से ही सही इंडियन गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी शिफ्ट कर लिया है। वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ ये पीस का ढोंग करके कोई फायदा नहीं है, पर अभी भी हमारे इंडियंस को, हमारे सिविलियंस को भ्रम से बाहर निकल। De-escalate. Humans are the carbohydrates of war. Peace is patriotism. War is destruction. Borders don't bleed. People do. Stop the war. An eye for an eye makes the world blind. De-escalate. There are no real victors in war. War is disaster for all concerned. The people who are afraid, the soldiers who lost their lives, the economy that suffers terribly. Wars are not fought on social media or TV studios. Jai Hind, prayers for all the places under blackout today. Terrorists attack civilians, kill civilians. Indian government attacks terrorists, kills terrorists. Pakistani government fights for the terrorists, shoots back, and on the day of ended up killing 16, 17 more civilians with artillery fire. Continuously attack cities with missiles and drones. In response to that, India attacks their air bases to stop the attacks, to de-escalate. करने की जरूरत है। अभी भी बहुत सारे इंडियंस हैं जो उसी सोच में विश्वास रखते हैं कि भारत और पाकिस्तान तो दो पिछड़े हुए भाई हैं, दोनों देश एक ही है। बट ये हम सोचते हैं, पाकिस्तान नहीं। आज उनका बच्चा बच्चा बोलता है कि भारत को तबाह कर देंगे, मैप से मिटा देंगे। ये बात हमें मान लेनी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा हमारा दुश्मन था, है और शायद आगे भी रहेगा। समय आ गया है कि हम भी इमोशनल फूल्स बनना बंद कर दें और जो जवान Pakistan in its current state, yes, I would agree. I think will always be eternally the enemy of India. Unfortunate as it may sound, unfortunate as it may be. I mean, if they're seriously implementing this propaganda into children's books, then yeah, 100%. पे हमारे लिए खून बहा रहे हैं। And I'm not saying Pakistani people. I'm saying the government, the military. That's what I'm saying. उनके कातिलों को सपोर्ट ना करें, ना इकोनॉमिकल सपोर्ट, ना हमारे देश में कोई अपॉर्चुनिटीज देने का सपोर्ट। अपने घर पे आराम से बैठ के दिस इज द लीस्ट वी कैन डू। जय हिंद।
Man, man, man. Man, man, man. All of us Indians should watch this video. True example, betrayal never comes from the enemies. I'm from Arunachal Pradesh, and we support India till our last breath. Stop watching Pakistani dramas, Turkey dramas, and Bollywood. India stays strong together. I'm from Nagaland and support my India at any cost. For Palestine, whole Bollywood stood so strong, but for Pahalgam, lost their voice. I appreciate the way you have put forward the agenda, practical thinking, real life examples. Love your nation. Real awesome. I'm from Assam, and we Assamese fully support India. Well covered and well explained. May this video reach the wide range of Indian. Man, I'm kind of curious to see what some of the newer comments have to say. Boycott Pakistan completely. Boycott Pakistan. Share the video to every Indian. Teaching of it, Pakistani Muslims is the same with Indian Muslims. The foundations being laid in madrasa. Madrasa education system should be completely banned and common education policy introduced for all children up to class X. These celebrities are jokers. They're neither patriotic nor does have backbone to support their country. We really need such storytellers in our country. This video is a harsh slap on the face of a secular Hindu. What do you guys think? What do you guys think, guys? What do you guys think? What do you guys think? Interesting video for sure. Very, very interesting video. Man, I didn't know they were like putting that stuff into to school books. That's what shocked me the most, is they're putting that sort of stuff into school books? That's crazy. That's crazy. Again, this video is going to be linked in the description down below. The past, I don't know, like 5 videos and live streams I've done on this channel has been limited and blocked by YouTube, so this one will be limited and blocked as well. So all I will say is thank you for watching. Please like, subscribe, share, and check out the original video. Yeah, take care. Goodbye.